Mathematical Sciences, PDPIS, Charuset, Changa. Okay, so the course is distributed in 5 units. Okay, I think Pragnesh sir already discussed all these things. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay, but I go through quickly. Okay, so if there is a new student, then he got the idea about our course. Okay, so is there any problem? No, sir. Okay, okay. So thank you for confirmation. So our course is distributed in 5 units. First unit is higher order derivatives and applications. Second unit is complex numbers and roots of polynomial equations. Third unit is matrix algebra 1. Fourth unit is partial differentiation. And fifth unit is applications of partial differentiation. Okay. So in first unit, discuss about the set theory and function, limit, continuity, differentiability for function of single variable, and its uses, mean value theorem, local maxima and minima, successive differentiation, nth derivative of elementary function, rational, logarithmic, trigonometric, exponential and hyperbolic, etc. Then tests of convergence of series, that means comparison test, ratio test, root test, Leibniz test. There are many tests for series, but in our syllabus we restrict it up to comparison test, ratio test, root test and Leibniz test. Then we will discuss about the power series expansion of a function, Maclaurin's and Taylor series expansion for single variable. Okay. Then Leibniz, the nth order derivatives of product of two functions. Okay, any problem? Sri. Okay, thank you. Okay, then we go for Al Hospital's rule and related applications and indeterminate forms. In unit 2, we will discuss about the complex numbers and their geometrical representation, then complex numbers in polar and exponential form, then de Moivre's theorem and its application, then exponential, logarithmic, trigonometric and hyperbolic functions, then statement of fundamental theorems of algebra, analytical solutions of cubic equation by Cardan's method. Okay, you all are familiar with quadratic equation. What do you mean by quadratic equation? Anybody? Quadratic equation, anybody know about it? Anybody? If you discuss with me, then you enjoy. No, sir. No idea. Good, Uttam. Very good. Then anybody? Okay. Highest power raised to 2. Yes, very good, very good. Highest power is 2. Very good. That means if you have ax square plus bx plus c. Okay, so you know about this, how to factorize this and all these things. Okay, so this is known as the quadratic equation. But what about the cubic equation? Cubic equation means like this: ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, so this type of equation is known as cubic equation, and to factorize or to find the analytical solution for that by using Cardan's method. Okay, so we will discuss this part in our course. Okay, then what about the biquadratic? Biquadratic means 4, means ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus, okay, dx plus c. Okay, so this is the biquadratic equation form, general form of biquadratic. So how to factorize it? So there is a one method for that. It is the Ferrari's method. Okay, so we will discuss it in this unit. Then matrix algebra 1. So matrix algebra 1 में हम क्या करेंगे? Definition of matrix, types of matrices and their properties, determinant and their properties, then rank and nullity of a matrix, then determination of rank, how to find the rank, we will discuss it. Then we go for the inverse of a matrix by Gauss-Jordan method, and at last of this unit we discuss about the solutions of a
system of linear equations by using Gauss elimination and Gauss. Okay. Anyone have problem in Hindi and English? No, sir. No? I want to confirmation from every student. If you have, then you can tell me, because I will No, sir. conduct my session in Hindi and English. And if you want to in English, then I no problem. There is no problem. Okay, no problem. Okay, good. Then Uday. No problem, sir. No problem, sir. Okay. Bariwala. No problem. Okay, thank you. Thank you for confirmation. Okay, so partial differentiation. So in partial differentiation, we will discuss about the partial derivative and geometrical interpretation. Okay, but why this required? So you know about this. This is your derivative dy by dx. Am I right? Yes, sir. This is the ordinary derivative. Okay. But whenever you talk about the del y by del x, that means you are using partial derivative. Okay, so और वो partial derivative क्या होता है? तो फर्स्ट जो ऑर्डर है आपके पास dy by dx है, तो dy by dx में आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव f of x is equal to x square, so what is the df by dx? What is the df by dx? 2x. 2x. Yeah. Okay, but if you have f of xy is equal to x plus y, that means here you have one variable and here you have two variables, so you go through only partial differentiation. That means if you want to find del f by del x or del f by del y, so this is the 1 and this is also 1. Okay, because the derivative with respect to x here 1, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 and y का 0, and यहाँ पे x का 0 and y का 1. That's why here we have 1. So this is the requirement. Means if you talk about the more than one variable, then you have to go with the partial differentiation for derivative. Okay, so the partial derivative and geometrical interpretation, then Euler's theorem with corollaries and their applications, then we will discuss about the chain rule, implicit functions and total differentials. Okay, and in unit number 5 we will discuss about the application of partial derivative. So where are it applicable? So you will find the Maclaurin-Taylor series expansion in two variables. In first unit we discuss about the first variable, or means only one variable. Here we discuss about the two variables. Okay, then tangent plane and normal line to a surface. If you have any surface and you want to find the tangent plane, then you need the partial differentiation. Okay, then maxima and minima for two variable, then Lagrange's method of multiplier, Jacobian. Okay, these are the applications of partial differentiations, and last one is errors and approximations. Okay, so what is the assessment scheme for MA143? So there are two assessment component. First one is internal assessment and second one is university assessment. Okay, so in internal assessment it may be online or offline. Due to COVID-19 we have no any idea about it. Okay, but we have two components, internal assessment and university assessment. It may be through online platform or offline platform. Okay, so internal assessment, in internal assessment you have to give the written exam. Okay, you have to appear in written exam. Written exam is you can say that it is internal examination unit test. Okay, so written exam examination. So the 15 marks weightage for written test. Okay, and quiz and or means ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन right now we have not any information about it. If there is a quiz and assignment, okay, और वो दोनों भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, and attendance is compulsory. Okay, so here there is no option, so attendance is compulsory. So from this criteria we will put 15 marks. Okay, so 15 plus 15 it will be 30 marks. Okay, so your internal assessment will be 30 marks.
In university assessment will be of 17 marks. So 13 plus 17, 100 marks evaluation, and you have to 45 marks for passing. Okay, so if you have 45 marks, then you are passed. Okay, in from both the assessment scheme. Okay, means internal and assessment दोनों को मिला के आपको 45 marks लाने हैं. Okay, and teaching distribution, so we will distribute it into two sections, section 1 and section 2. In section 1 we will discuss about the unit 1 and 2, and this will be taught by किसने स्टार्ट किया ये? प्रज्ञेश सर ने. ओके, आपको प्रज्ञेश सर ने स्टार्ट किया कि नहीं सेट थ्योरी? Yes, Yeah. Yes or no? Okay, so unit 1, sorry, section 1 will be taught by our Pragnesh sir, and section 2, unit 3, unit 4 and unit 5 will be taught by myself, Dr. Jimitar Patel. Okay, so thank you. This is our course introduction. Any doubt up to here? Student? No, sir. Okay. no, sir. Okay. Then we go for our unit introduction. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay, so I start introduction of my section. So my section is unit 2, sorry, section 2, and we will discuss during the semester unit number 3, unit number 4 and unit number 5. So today I start unit number 3, matrix algebra 1. So in matrix algebra 1 we will discuss all these things. So things are definition of matrix, types of matrices and their properties, the determinant and their properties, rank and nullity of a matrix, determination of rank, inverse of a matrix by Gauss-Jordan method. Okay, so all these concepts we will discuss. Then at last, using these concepts we will solve our system of linear equations by Gauss elimination and Gauss-Jordan method. So these four concepts are new for you because you are familiar with first and second one. Am I right? Yes. Okay, so I start with the basic definition of matrix. So this is the unit. So what do you know about the matrix? What is the definition of matrix? Matrix किसको बोलते हैं? Anybody? मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? A set of columns or rows. ओके, गुड, वेरी गुड. जो भी आपको दिमाग में आता है आप बोल सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, है ना? वट एवर यू नो. ओके, आपको कुछ भी पता है आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ. रॉन्ग या राइट, डोंट वरी, डोंट बर्दर अबाउट इट, बट डिस्कस विथ मी. ओके, सो एनी अदर? Same answer. Same answer. Okay, so here you have definition. A set of mn means आपके पास कोई भी mn नंबर हो या ऑब्जेक्ट्स हो. ओके, और उसको आपको रो एंड कॉलम में अगर आप कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, मींस m रोज एंड n कॉलम्स में, देन इट इज द मैट्रिक्स. ओके, दैट मींस अ सेट ऑफ m into n numbers or objects arranged in the form of a rectangular array having m numbers of rows and n numbers of columns called an m cross n matrix. Okay, so this is the
order of the matrix. Means if you have 9 things or 9 letters, so if you arrange like this A B C D E F और कुछ भी ले सकते हो P Q R, ओके, आपके पास जितने हैं उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, then you can say that it is a matrix. Okay, any confusion in matrix? No, sir. Okay, so matrix can be represented by these two brackets. That means you can write in this way or in this way. Okay, clear? So these are the notation for matrix representation. Then you can also denote it by bracket, small bracket, aij. Aij indicates the element. Okay, aij, m cross n, and box bracket aij, m cross n. These both are the denotation for matrix. Okay, so types of matrices. First I consider A is equal to aij, m cross n. Okay, so what is the row matrix? Anybody have any idea? Row matrix इसको बोलते हैं. It only has row. Yes, it only have one row, not a row. Okay, one row, एक ही रो होना चाहिए. तो can I say that कि मेरे पास m cross n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसको मुझे रो मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है, तो व्हाट आई डू हियर, तो मुझे कंपलसरी क्या करना है, m इज इक्वल टू 1 ना. Yeah. Okay, क्योंकि m इंडिकेट्स माय नंबर ऑफ रो एंड n इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम, तो मुझे एक ही रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो मेरा नया फॉर्म क्या हुआ, 1 क्रॉस n हुआ, एंड इट विल ऑलवेज रो मैट्रिक्स. क्लियर? Yeah. Yes, sir. Okay, so the definition of this one, if m is equal to 1 then A is called a row matrix. Okay, तो यहाँ पे m को 1 कर देंगे तो row matrix. Example, okay, 1 minus 1 0, or you can put anything in this bracket. Okay, तो यहाँ पे ये हो जाएगा row matrix. Then column matrix के लिए क्या करेंगे, तो column matrix के लिए किसको 1 बनाएंगे, N को. n इज इक्वल टू 1, तो हमारा नया फॉर्म हुआ m क्रॉस 1. तो जब भी आपके पास m क्रॉस 1 टाइप का मैट्रिक्स हो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स. तो इफ n इज इक्वल टू 1 देन A इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, सो दीज बोथ आर द कॉलम मैट्रिक्स. आप इसमें देखो, रो चाहे कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, ओनली 1. ओके, सो दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स. देन स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको पता है, चलो बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे. M equal to n. Yes, very good, very good. M is equal to n. If you have the number of rows and number of columns are same, then you can say that it is a square matrix. So here the definition, if m is equal to n, then A is called a square matrix. So the entries A11, A22 up to AMM are called the entries of the प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, यहाँ पे हमने किसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल डायगोनल. दैट मींस m क्रॉस n तो हो गया. चलो ये मेरा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो मेरी प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी होगी, तो ये रहा मेरा A11, A22 एंड A33, बिकॉज इफ आई पुट हियर A21, A12, A13, A23, A31, A32. Okay, so this is my 3 cross 3 जनरल फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे जो ये है एंट्रीज, जो ये तीनों ही तीनों एंट्री किसकी हो जाएगी, मेन प्रिंसिपल, सॉरी मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल की. डन, क्लियर? देन कंफ्यूजन इन स्क्वायर मैट्रिक्स. No, sir. Example for square matrix. Okay, so first is 2 cross 2, second is 3 cross 3. Okay, so these are the examples for square matrix. Null matrix. Okay, you want null matrix. So क्या होगा null matrix, कौन बताएगा? All the elements are 0. Yes, all the elements are 0. Very good. Okay, so this is the definition. If
A11 is equal to 0 for all I and j, then A is called null matrix. Okay, means all elements will be 0. Aij 0 means आपको सभी जगह पे 0 0 0 0 रखना है. Okay, done. Then next concept is okay. So these are the examples for that 0 0 0 0 0 0. Okay, triangular matrix. Have you any idea about triangular matrix? No, sir. No, sir. नो. ओके. सो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर आप देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा. ओके, तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है मैट्रिक्स वो है 3x3 मैट्रिक्स. ओके, सिंपल केस ले रहा हूँ. तो ये इसमें से मेरी ये मेन डायगोनल है. तो मेन डायगोनल से मुझे क्या मिलेगा, देखो आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे. ये वाला नीचे वाला है ना, और दूसरा जो है, ओके आई कैन चेंज माई इंक ऑल्सो. यस, ओके, सो आई चेंज माई. ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सो ये जो है ये मेरा लोअर टाइप का हो रहा है. ओके, और ये जो दूसरा है वो दूसरा मैट्रिक्स कैसे सॉरी ट्राइंगल कैसे मिलेगा, इस तरीके से. यस और नो? ओके, क्लियर? Yes. ओके, तो यहाँ पे देखो जो नीचे का ट्रायंगल बन रहा है तो वो आप देखेंगे तो ये रहा, और दूसरा ऊपर वाला जो बन रहा है वो ऐसे होगा. ओके, तो aij इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे सच दैट i ग्रेटर देन j. तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग i2 एंड j1, तो ये 2 ग्रेटर देन 1 हुआ. तो ये मेरी एंट्री कौन सी हुई, A21. तो A21 कहाँ पे आएगा, तो ये पोजीशन पे A21 बैठा है. ओके, तो A21 वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सिमिलरली दिस वन विल बी 0 एंड दिस वन विल बी 0. तो ये तीन एंट्री 0 हुआ, तो ये कहाँ पे बन रहा है, अपर साइड पे. सो दिस इज आवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? ये तीनों ही तीनों एंट्री को क्या बनना पड़ेगा, 0. तो यू कैन सी हियर दीज आर द एग्जांपल्स. तो यहाँ पे आप देखो ये जो हुआ, ये तीनों ही तीनों एंट्री मस्ट बी 0 होना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे हम, अपर, क्योंकि अपर की ओर ट्राइंगल बन रहा है. डन. एंड सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, जो नीचे की वैल्यू है, मींस सॉरी ऊपर की वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू कौन कौन सी है, आई चेंज माय इंक. ओके, सो इफ यू सी हियर, तो ऊपर की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो यू कैन सी दिस वन and this one, means A12, A13 and A23. तो ये तीनों ही तीनों 0 बनेंगे, तो ये नीचे की ओर ट्राइंगल बन रहा है. तो दिस इज माय ओरिजिनल ट्राइंगल. ओके, सो दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? No, sir. No, sir. Lower, so you can see here these three values are 0, so you can say that it is lower, क्योंकि जहां पे ट्राइंगल बन रहा है वही उसका फॉर्म है. तो लोअर बन रहा है तो लोअर ट्राइंगुलर, अपर बन रहा है तो अपर ट्राइंगुलर. ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एनीबॉडी? डायगोनल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो प्लीज यू कैन से दैट सर नो आइडिया, आई एक्सेप्ट इट. Diagonal ओके, नो प्रॉब्लम. 0. सॉरी, Diagonal के अलावा वेरी गुड स्ट्रेट. ओके, डायगोनल के अलावा सारी एंट्री क्या हो जाएगी, 0. तो डायगोनल फॉर्म मींस क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, ये वाला ये वाला ये वाला, ओके, उसके अलावा सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. देन यू कैन से दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, कैन सी दैट 1 0 0 3. तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, डायगोनल 1 3 है, बाकी की सारी एंट्री 0 है. तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, स्केलर मैट्रिक्स, एनी आइडिया? No, sir. ओके,
सो स्केलर मैट्रिक्स मींस क्या है कि वो डायगोनल होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि वो डायगोनल होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डायगोनल है और डायगोनल की सभी वैल्यू सेम है और बाकी की सारी वैल्यू तो जीरो ही होना चाहिए क्योंकि हम वी आर कंसिडरिंग डायगोनल। तो अगर सभी डायगोनल की वैल्यूज दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो this matrix A is diagonal matrix, that is the first condition, and second condition is A11 A22 up to son AMN are same। यहाँ पे देखो equal to equal to equal to। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, then we can say that it is scalar matrix and these are the examples। देखो यहाँ पे 1 1 है ना, यहाँ पे 2 2 2, तो ये सारे क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। डन? ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता ही है आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? All components are one. 1, यस, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर, तो फर्स्ट हमारा था कि वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स हमने कर दिया तो वो सारी एंट्री जो है डायगोनल की वो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन इट इज इक्वल टू 1, तो सारी एंट्री मस्ट बी, all entries must be 1। okay, then it is called an identity matrix। so here you can see that this is 1 0 0 1 1 1 1। okay, so these all diagonal must be 1। okay, and it has the denotation means you can denote it by im means I2। अगर मैंने I2 लिखा है तो क्या हो जाएगा वो I2 मीन्स क्या होगा 2 क्रॉस 2। ओके, क्योंकि m लिया है दैट मीन्स रो है ना, तो वो 2 क्रॉस 2 होगा। तो 2 क्रॉस 2 तो हम पता ही है, हमने यहाँ पे लिखा है यस I2 इज हियर। ओके, सो यू कैन वेरीफाई इट। I3 इज आल्सो हियर। इफ आई पुट I4 तो I4 में क्या होगा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा और सभी डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी की सारी 0। क्लियर? सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन सब मैट्रिक्स, एनी आइडिया अबाउट सब मैट्रिक्स? No, sir. ओके, तो सब मैट्रिक्स में क्या होगा? तो सब मैट्रिक्स में आपके पास बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसमें से आप कट शॉर्ट करके आप कोई नया मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दो उसकी पोजीशन चेंज किया बिना। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखो तो आपको जल्दी पता चलेगा। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग मीन्स गायब करना। ओके, उसको हटाना। सम रोज एंड कॉलम from the matrix A is called a sub matrix of the matrix A। एग्जाम्पल देखो तो जल्दी पता चलेगा। यहाँ पे 2 3 10 11 मैंने लिखा है, लेकिन वो किसका सब मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे देखो 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो इसमें से ये मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी, मीन्स फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया। अब मुझे 2 3 रहने देना है तो ये इसको हटाया है, 10 11 भी है उसको भी रखना है तो इसको भी हटाया, और ये 3 एंट्री। दैट मीन्स मैंने क्या किया, सेकंड रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया एंड लास्ट कॉलम को डिलीट किया, तब जाके मुझे क्या मिला, एक नया मैट्रिक्स मिला एंड इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड इट इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्लियर? एनी डाउट इन सब मैट्रिक्स? No, sir. No, sir. क्लियर? ओके, आप को पता चल गया है तो देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सो दो मैट्रिक्स को कब इक्वल बोल पाएंगे हम? एनीबॉडी? When all the elements are same in both the matrices. Okay, elements are same in matrices. Okay, Aij equals Bij. Aij is equal to Bij. Very good. Then any other Value of same. value of? All matrix value of same are same. Okay. All the matrix of the values are same. That means Aij is equal to Bij. Okay, you all are right, but you miss one thing. वो कौन सी थिंग है वो आइडेंटिफाई करो। कौन सी थिंग है वो? दोनों का ऑर्डर तो पहले सेम होना चाहिए ना। एम आई राइट? Yes.
Okay, so this is the definition. Two matrices A is equal to Aij, M cross N, B is equal to Bij, P cross Q are said to be equal if number one कि M is equal to P, that means उसकी number of rows same होनी चाहिए. Clear? M is equal to P. Number of column same होने चाहिए, that means N is equal to Q. And second thing is एलिमेंट जो आपने बताया वही द एलिमेंट्स एट द रिस्पेक्टिव पोजीशंस आर इक्वल, दैट मींस aij is equal to bij. If you have these two properties, two conditions, then you can say that two matrices are equal. Am I right or wrong? Right. Right, sir. Okay. And addition, okay, ये तो पता ही है आपको. How we can add two matrix? Anybody? First, they have same rows or Okay. columns, and चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. ओके, उसका आंसर मुझे बताओ तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 0 1 एंड 3 4 5 एंड यहाँ पे -1 2 0. ओके, अब ये दोनों मैट्रिक्स के एडिशन करो तो. Addition is not possible. Yes, very good. Addition is not possible. But if I remove this, okay, मैं इसको अगर remove कर देता हूँ, 1 मिनट, अगर मैं इसको remove कर देता हूँ, okay, if I remove from this matrix, then it is possible or not? Yes, possible. Yes. तो और इसका एडिशन बताओ तो क्या होगा? 2 2 4 2 2 4 4 7 7 9 9 11 11. 9 11. वेरी गुड. ओके, तो आपने किया क्या? तो पहले तो आपने चेक किया कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं. ओके, देन फॉर फर्दर प्रोसीजर यू डू एंट्री बाय एंट्री एडिशन, है ना. दैट मीन्स 1 + 1 तब जाके 2 आया, 2 + 0 तब जाके 2 आया, 3 + 1 4 आया. एम आई राइट और रॉन्ग? right. Right, sir. ओके, तो आपने दो चीज एक साथ किया. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में वही डिस्कस करना चाहते हैं कि लेट A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij, P क्रॉस Q है और वो M क्रॉस N है. तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? M इज इक्वल टू P होना चाहिए एंड N इज इक्वल टू Q होना चाहिए, जो आपने ऑर्डर चेक किया वही. ओके, B टू मैट्रिसेस, देन द एडिशन इज पॉसिबल. कब पॉसिबल होगा? ओनली इफ M is equal to P and N is equal to Q, first condition, and second is A plus B is equal to Aij plus Bij. That means आपको क्या करना है? एंट्री टू एंट्री एडिशन करना है. ओके, और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तब जाके जब आपका आउटपुट वाला मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा. दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिला 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. डन? एनी कंफ्यूजन इन एडिशन? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Example for it, A is equal to something and B is equal to something, then A plus B is equal to this. हमने दूसरा एक एग्जाम्पल ऑलरेडी कर दिया है. देन प्रॉपर्टीज. ओके, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, यू नो वेरी वेल. ए बी सी में 3 मैट्रिक्स ले रहा हूं. ओके, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं वो भी आपको बताना मैं भूल गया, फॉरगॉट टू मेंशन यू. कैपिटल एंट्रीज जो है मींस कैपिटल लेटर्स जो है, इट इंडिकेट्स द आवर मैट्रिक्स. ओके, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी हमारे पास 3 मैट्रिक्स है. उसकी एंट्रीज कैसी हैं? तो ए की एआईजे है, बी की बीआईजे है एंड सी की सीआईजे, और तीनों के ऑर्डर सेम है. All A, B, C are in same order. Okay, B3 matrices. Then number 1, A plus B is equal to B plus A. That means it is commutativity. Okay, that means आप इसको आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं है, you can do. Okay. Second thing is, if you start with bracket A plus B and if you add plus C, okay, that means if you add C, then end.
A plus, first you find B plus C and add A, both have the same answer. Okay, any confusion? It is associativity. Okay, any problem in properties of addition? No, sir. No, sir. Okay, then we go for this scalar multiplication. Scalar multiplication किसी को पता है? Anybody have any idea? सोच के बताओ. Yes, Sahil. Sahil, you want to say something? No idea, sir. Okay, very good. Then anybody? Yes or no तो बताओ यार. तो मुझे पता चला कि मुझे किस तरीके से. No, sir. No, very good. Thank you for your confirmation. Okay, anybody? Uttam, Jay. No, sir. Okay, no idea. Good. Shrey and Prem. Sir, can we do that? We will take two matrices, Yes. and in first matrix we will take row, and we will multiply correspondingly with the uh, column of other matrices. Okay, that means you are saying about the simple multiplication. Okay, multiplication of two matrices. Clear, Prem? Yes. आपका Yes. आंसर सही है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए दिस इज दी अवर नेक्स्ट पार्ट. लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ. आप मैं जैसे ही लिखूंगा ना आप बोलेंगे कि यस सर वी नो इट. ओके, देखते हैं चलो कितने लोग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ यू हैव ए इज इक्वल टू, देखना अच्छी तरीके से, आपके पास ए है 3 1 0 एंड -1 एंड आई वांट टू फाइंड 2a. मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, क्या sir. होगा? क्या होगा? Yes, sir. 6 to 6 to 0 minus 0 2. minus 2. यस, तो ये जो आपने किया ना वो क्या है, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मींस you have to multiply any scalar to any matrix. It is known as scalar multiplication. Done? जानते हो ना आप? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Let A is equal to Aij, M cross N be a matrix and K be a number, then K into A is equal to, ये A matrix आया देखो, in और K into Aij, that means every element should be multiplied by K. ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओनली रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो. मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय each element. Okay, for example, if you have A is equal to 1 0 minus 1 3 2 0 0 1 0. Okay, तो अगर if I want to find 5 into A, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, every element of A would be multiplied by 5. Okay, तो यहाँ पे 5 into A, तो 5 0 minus 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 10 0 0 5 0. Is it okay? Clear? Is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that means you have to multiply by every entry by that scalar. Okay, so this is the another example. Okay, मैं आप यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ so you can see easily. Yes, now it is visible. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, that means let A is equal to 1 0 0 1 2 3, and if you find 2a, then this is your answer. Okay. Properties of scalar multiplication. What are the properties of scalar multiplication? सिंपल है, बहुत सिंपल है ना. जैसे आप पढ़ के आए हो ऐसे ही है. तो फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी,
K1 A plus B is equal to K1 A plus K1 B. So if you find 2A plus B, okay. So what is our property? 2A plus 2B means आप इस तरीके से जाओ या फिर इस तरीके से जाओ, दोनों के आंसर कैसे आएंगे? सेम। डन? क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से और इस तरीके से मीन्स क्या हुआ? इफ यू फर्स्ट फाइंड a plus b and then multiply by 2, and if you multiply by 2 individually to a and b and then take addition, then you will get same answer. Any confusion in property number 1, student? No, No, sir. sir. Okay. Same, if you have k1 plus k2, two scalar, okay, then if you multiply to a, then it is individually also multiplied by a. That means k1a plus k2a. That means if you find 2 plus 3 into a, then it is also 2a plus 3a. Am I right? Okay. Is it correct or not? Yes, sir. Correct. Okay, this is the another property. Then third property, k1 k2a, this is for multiplication. Okay, so यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज है कि k1 into k2, that means if you 2 into 3 do 2 into 3 into a, it will be, if 2 into 3a करो तो भी चलेगा, और अगर 3 को बाहर रखते हो 2a पहले फाइंड कर दो तो भी चलेगा. Okay, all these have same answer. Done? Any problem? No, sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. इसको हम नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे ताकि आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मैं समझा पाऊँ. ओके, तो उसको अच्छी तरीके से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन टुडे सेशन? No, sir. No, No, sir. sir. नो. No, sir. No, sir. ओके.